बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाक अफ़गान सरहद के ऊपर क्या चल रहा है, इस सारी सूरत हाल को लेके बहुत सारे सवाल हैं। ट्विटर के ऊपर भी बात हो रही है, सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है। उसमें से कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ चीज़ें उसमें हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। बेसिकली हमें पाक अफ़गान बॉर्डर के हालिया जो इस वक्त का तनाज़ा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना ज़रूरी है। बुनियादी तौर पे आप और हम सब जानते हैं कि जब अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान यानी TTA की हुकूमत आनी थी, उससे पहले दोहा में एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में ये तय पाया कि अफ़गानिस्तान विल नॉट अलाउ एनी टेररिस्ट टू ऑपरेट फ्राम इट्स सॉइल। तो उसमें ये तय था कि आइदर इट इज़ TTP, आइदर इट्स BLA और एनी अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अंडर द शेल्टर ऑफ अफ़गानिस्तान, they will not be allowed to operate against any country. Any country mean now they can train and send terrorists in Pakistan. Now they can do any activity in United States, any other country of the region or in the world. लेकिन हुआ क्या? After the Tehreek Taliban Afghanistan take over and made government in Afghanistan, they not only providing shelter to the terrorist organization like Tehreek-e-Taliban Pakistan or Baloch Liberation Army or many other terrorist organizations, but also providing them weapon, also providing them funding. You may know the name of terrorist leader Noor Wali Masood, which is basically believed to be dead 2 days back in Kabul or anywhere else in Afghanistan. लेकिन वो जो दहशतगर्द था नूर वली मसूद, जिसके बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि वो शायद मारा जा चुका है, कैसे मारा गया इसकी अभी तक कोई तफसीलात वाज़े तौर पे सामने नहीं आई हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान की साइड से भी कुछ उनके लोकल मीडिया सोर्सेज, कुछ उनके जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि नूर वली मसूद हु इज़ हेडिंग बैंड टेररिस्ट आउटफिट तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैज़ बिन किल्ड in Afghanistan 2 days back, but still there is no any we can say confirmation from the government of Pakistan or any other side, but still media is reporting that he is no more. लेकिन when Afghan Taliban took over Afghanistan, they were providing 52,000 USD to this notorious gangster, notorious terrorist, and notorious killer Noor Wali Masood, which is believed which is believed dead as now we are talking. But in past, near past, Tehreek Taliban Afghanistan were not only funding him but also providing him safe haven to train terrorists and send them to Pakistan to take different targets, which involved in suicide bombing, target killings, kidnapping, and many other notorious crimes. तो अब बेसिकली पाकिस्तान रिपीटेडली कहता रहा अफ़गानिस्तान को, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की लीडरशिप को, कि वो ये दहशतगर्दी रोकें. पाकिस्तान also appealed to the international community even many times to tell Afghanistan to implement Doha Agreement and not to वायलेट द दोहा एग्रीमेंट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर अमल नहीं हुआ. तो अब क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान इज़ हब ऑफ द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट. Now already many of us know China is engaged in a huge investment in Pakistan. Similarly, many other countries are also interested for some projects in different areas of Pakistan. But this terrorism, which is basically backed and financed by India by using Afghan soil, is disrupting Pakistan's economic development. It's disrupting the Pakistan peace. तो पाकिस्तान ने फिर ये फैसला किया कि we will defeat this terrorism by targeting the hideouts of the terrorist. तो अब जब पाकिस्तान दहशतगर्दों की हाइडआउट्स को, या जो पाक अफ़गान बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान की साइड के ऊपर, जहाँ कहीं दहशतगर्दों ने इन्फिल्ट्रेट करके आए हुए हैं, या वो किसी किस्म की नोटोरियस प्लानिंग कर रहे हैं, या हालिया दिनों में आप जानते हैं कि कई दहशतगर्दी के हमले इस रीजन के अंदर, इस पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर उन्होंने किए, जिसमें हमारे सिविलियंस और मिलिट्री जवान शहीद हुए.
और ये सिर्फ एक तो ज़ाहिर कुर्बानियाँ हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेशनली एक गलत मैसेज देता है। और इंटरनेशनली जब ये टेररिस्ट अटैक करते हैं तो एक मैसेज जाता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज को ख़राब करता है। तो पाकिस्तान ने अब जब ये फ़ैसला किया कि हम चुन चुन के दहशतगर्दों के हाइड आउट्स को या उन पॉइंट्स को जहाँ से वो इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं और पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे या सिविलियन पे हमले करते हैं, हम उनका पीछा करेंगे एंड वी विल किल देम on all of their hideouts, where they are hiding, where they are planning, where they and where they are trying to infiltrate inside Pakistan. So Pakistan decided to counter them by all means. अब हुआ ये कि everyone, Afghan minister now, he is Muttaqi is in India these days, and he is on 6-day long visit of India. He is meeting with the National Security Advisor of the India. He is meeting with their ministers. He is meeting with their intelligence operatives as well. So what is the plan? Basically, plan is to that India will open its embassy in Pakistan, reopen its embassy in basically Afghanistan. But what's the plan of India? The greater plan is to get involved in subversive activities more effectively. So they decided, and they made a plan with the Afghan minister, that they will provide the weapon, they will provide all kind of assistance to the terrorists while using Afghan soil, and ultimately their objective is to disrupt the peace of Pakistan, sabotage the peace of Pakistan, and to sabotage the development projects in Pakistan, specifically Pak-China Economic Corridor, which is now entering into the phase 2. This is basically a project which India never want to complete, because India understand if this project will be completed, so there will be a lot of things will change, and maybe Afghanistan will even not play in the hands of India. तो इस वजह से ये ग्रेटर प्लान है, उसको लेके अब इंडिया अफ़गानिस्तान में आ रहा है। और पाकिस्तान ने जब ये बॉर्डर एरिया के अंदर कार्रवाई की है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तो इंडिया को इससे तकलीफ़ हुई है, एंड इंडिया फाइनली एक्सेलरेटेड एंड गियर्ड अप द तालिबान लीडरशिप टू टेक एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अब हुआ ये है कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस आर फायरिंग ऑन पाक अफ़गान बॉर्डर. They want to protect their assets. What are their assets? Of course, their assets are terrorists. They are sitting across the border, and they're trying to infiltrate inside Pakistan for more terrorist attack. When Pakistan Army and Pakistan Security Forces responded to these terrorists, so Afghan forces are engaged in the war with Pakistan, and they only trying to protect their terrorist asset on behalf of India. Basically India is playing. तो अब मामला ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अफ़गान जारियत कर रहा है बॉर्डर के ऊपर, उनकी फोर्सेस फायरिंग कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उसका बहुत इफ़ेक्टिवली जवाब दिया है. पाकिस्तान इज़ रिस्पॉन्डिंग बट वेरी, यू कैन से, as a responsible state. Pakistan is not offensive to attack inside Pakistan or inside Afghanistan, sorry, but Pakistan is only defending its territorial sovereignty, because Afghan forces are involved in heavy fire with using heavy equipment, heavy military equipment on the directions and under the patronage of India, unfortunately, because India don't want to damage the terrorist infrastructure. So India is now fully open and standing with the Taliban leadership, asking them to send more and more terrorists inside Pakistan to sabotage Pakistan peace and development projects. So अभी जो पोजीशन है कि कुरम में पाक अफ़गान सरहद पे तालिबान ने क्योंकि हमला पहले किया, लेकिन फिर अब उनकी हालत ये है कि तालिबान आर रनिंग अवे after you can say leaving their dead bodies in that area. So similarly reports from many other areas coming in that many Afghan checkposts and adjacent to the Afghan military checkpost or forces checkpost, there are also some checkposts of the terrorists as well.
you can say the launching pad of the terrorist, where they are preparing a plan and sending terrorists inside Pakistan. So now when they are engaged with, they attacked on Pakistan. So in retaliation and responding, their many posts are now destroyed. But even then, Afghan government is trying their best to protect the terrorist infrastructure and all that on their side. Secondly, there is a very one more concerning point, that not only Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) is fighting alongside with the Afghan forces against Pakistan, but Daesh, ISIS, a known international global terrorist outfit, is also standing shoulder to shoulder with the Afghan forces, and they are also firing on Pakistan. But Pakistan armed forces, Pakistan paramilitary forces are responding the aggression of the Afghan forces and their terrorist organizations. And as of now we are speaking, we just received a news that Pakistani forces just hit one of the headquarters of the ISIS and TTP across the border, from which they are basically involved in continuously firing with a heavy weapon. सो अभी तक की ये तफसीलात हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आपको अपडेट रखेंगे कि क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के ऊपर होता रहा है। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच।